Hanji, good morning students. Better today in this lecture, I am going to discuss about the numerical problems which is based on the convex mirror. So beta before going toward the numerical problems, beta in the last lecture, I had given one homework to you. Sample problem number 6. What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is negative of 0.75? So answer is beta, the nature of the image is real and inverted when the magnification will be negative. So now beta, in order to solve the numerical problems based on the convex mirror, we should remember that mirror formula for convex mirror is the same as that for the concave mirror. So that 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f, where v is the image distance, u is the object distance and f is the focal length. सो बेटा इसका की मतलब है कि बेटा जो मिरर फॉर्मूला है इज सेम फॉर बोथ मिरर्स, कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव मिरर्स. But one thing is more beta, when we will deal with the convex mirrors, beta in the convex mirror image always formed behind the mirror. It means in this case the image distance v is always positive. ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਬੇਟਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਟਾ ਇਨ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ x ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਟੂ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ ਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਗੀ. ਸੋ ਬੇਟਾ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ same as a concave mirror beta h2 by h1 or negative of v by u. So let us discuss one simple problem related to convex mirror. So first beta, an object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position, nature and size of the image. So firstly beta we will see which quantities are given in the statement. So first is an object 5 centimeter high. It means beta height of the object is given, means h1 or h equals to 5 centimeter. Next is a beta object distance beta 10 centimeter given. Okay ji, and one thing more beta radius of curvature 30 centimeter given. Now what we have to do? Find the nature, position and size. Now beta firstly we will find the position of image. It means the value of v. Beta by using the mirror formula 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f. Beta u given है, f ਅਸੀਂ find करना है, sorry v ਅਸੀਂ find करना है, but f नहीं है. But we also know that beta f equals to r by 2. r given है beta, डिवाइड किया 2 ਦੇ ਨਾਲ, then we will get f equals to 15 centimeter. कन्वेक्स है तो की है बेटे पॉजिटिव है फोकल लेंथ. now beta put these values in the mirror formula. At the end we will find the image distance which is equals to plus 6 centimeter. It means v equals to beta positive. It means image beta is formed behind the mirror and nature of the image is वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज बेटा जो इमेज बिहाइंड द मिरर होगी वो ऑलवेज वर्चुअल होगी, अगर वो वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी. तो बेटे साढ़े दो चीज़ां से उसी फाइंड कर चुके हैं, पोजीशन एंड नेचर. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द साइज ऑफ इमेज. बेटा साइज ऑफ इमेज m इक्वल्स टू h2 बाई h1. ठीक है जी. हुण आपां की करना है बेटे, h2 नूं फाइंड करना है. h1 गिवन है बेटा बट m गिवन नहीं है साढ़े कोल. सो फर्स्टली बेटे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन बाय यूजिंग विच फार्मूला बेटे, फ्रॉम अनदर फार्मूला एफ m इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई u. ठीक है जी. सो बेटे मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू माइनस v बाई u. नाउ बेटा पुट द वैल्यूज ऑफ v एंड u. एट द एंड we will get m equals to 0.6. there is no units beta because both the quantities having same unit. इस करके बेटे मैग्नीफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है.
now using beta another formula h2 by h1। now ਹੁਣ ਬੇਟਾ m ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, h ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਥਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। now ਬੇਟੇ ਪੁੱਟ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਦ ਆਂਸਰ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਇਮੇਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 centimeter। so beta this is all about the numerical problem based on the convex mirror।